Atma Namaste, everyone. I welcome you all to our session of Tea Time with our special guest. Today we have with us Shalin Bhagat ji from Mumbai. Shalin Bhagat ji is into pranic healing since 1997 with an experience over 24 years in teaching in different parts of India and abroad. He has produced many students and opened up new territories to spread pranic healing. His one-pointed approach towards pranic healing has transformed his life on personal, professional levels. A family man and an entrepreneur, an amazing healer, and a wonderful instructor. He delivers pranic healing courses with proficiency in English, Hindi, and Gujarati languages. He is popular amongst his students for his amazing, humorous style of teaching, even the tough subjects with out-of-box example, making his classes lively and highly interactive. A self-motivated man, he keeps motivating others to be constant in their lives. He is an authorized trainer of basic, advanced psychotherapy, crystal pranic healing, and achieving oneness with the higher soul. He is an ex-managing trustee of Yog Vidya Pranic Healing Foundation Trust of Maharashtra, North Mumbai, and he has very interesting hobbies of thinking, eating, sleeping, and living pranic healing. So I welcome Shalin Bhagat ji to our session of tea time with our special guest. Welcome Shalin ji to our session. So you have to unmute yourself. Sometimes when I do higher meditation, people cannot hear me. I'm just joking. Thank you for your nice introduction. Thank you so much. Atma Namaste. And thank you, everyone. I just say nowadays, when I start the session, have you heard my name? And then I say, Naam to suna hi hoga. Okay, thank you so much. So let's start, without delaying, we will start with our today's topic. And first of all, thank you. It's a nice time, no? Tea time with, tea time. So, सब लोगों ने चाय पी लगता है चाय पी लिया सब लोगों ने सर मैंने तो पी लिया मेरा कप तो रेडी है नहीं सब लोग ये why मैंने I noticed that why people put their video off मालूम है क्योंकि ये लोग अपने आप एंजॉय करते हैं अकेले अकेले एंड उनको लगता है कि ये लिंक हो जाएगा अपने समोसे या चाट मसाले से तो ये कट नहीं होगा कॉर्ड कटिंग भारी पड़ेगा ये तो प्रॉब्लम सो पीपल ऑलवेज आई सी वीडियो ऑफ कर देते हैं मतलब और चुप चुप के सो प्लीज डोंट डू दैट बी जनरस प्रॉस्परस बनना है तो जनरस भी बनना पड़ेगा आप लोगों को शेयर मुझे समोसा बड़ा याद आ रहा है अलवर का सो एंड लखनऊ का भी लखनऊ इज ऑल्सो गुड फॉर समोसा and Delhi chaat masala, various items. Okay, let's start. So today's interesting topic. So let's start. First of all, I would like to record the session. Atma Namaste, welcome. So let's do the prayer. To the Supreme God, Divine Father, Mother, to our beloved teacher, Grandmaster Chokoksi, Lord Maha Guruji, mailing all the great good ones, all the holy gurus, holy masters, saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, and spiritual elders. We humbly invoke for your divine guidance, health, and protection to learn and understand the concept of meditation on twin hearts in best of the best way. With thanks and in full faith, thank you. Thank you for joining the prayer. Open your eyes with a smile. Atma Namaste. Welcome to the session. So let's start. Now, let me share the presentation with you. So first of all, this is open for all. So just let me introduce our Guruji. So our Guruji, his name is Grandmaster Choakok Sui, and he is the one who is the founder of modern pranic healing, and Arhati Yoga is a higher meditation course. ये हमारे गुरुजी है जिनका नाम है मास्टर चौकोक सुई और उन्होंने ही प्राणिक हीलिंग का संशोधन किया और एक अरहती योगा जो कोर्स है हमारे हायर कोर्सेज उसके हायर कोर्सेज का जो प्रैक्टिस है वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है हमें सो बाय द वे द सेशन विल बी इन बोथ द लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी सेशन दोनों लैंग्वेज में रहेगा
इंग्लिश और हिंदी, ताकि कुछ लोगों को हिंदी में दिक्कत होती है तो इंग्लिश, कुछ लोगों को हिंदी इंग्लिश में दिक्कत है तो इंग्लिश. क्लियर? ओके. सो नाउ मास्टर gave a beautiful meditation on twin hearts, available for all. गुरु जी ने एक बहुत ही अच्छा मेडिटेशन दिया है, सभी के लिए दिया हुआ है, कि सब लोग ये प्रैक्टिस करें, सब लोग ये प्रैक्टिस करें. ऑल प्रैक्टिसेस एंड प्यूरिफाई themselves on physical and psychological level. गुरुजी ने ये मेडिटेशन इसलिए दिया कि आप ये मेडिटेशन द्वारा अपने आप की फिजिकल और साइकोलॉजिकल सेल्फ हीलिंग कर सको. ओके. सो हाउ कम, what is the that power about that meditation, that by just doing that we can heal ourselves on physical and psychological level. उस मेडिटेशन में इतनी ऐसा तो क्या पावर है कि जिससे हमारा फिजिकल और साइकोलॉजिकल एलिमेंट उसकी शुद्धि हो सकती है, हम फिजिकली और साइकोलॉजिकली अच्छे हो सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट फर्स्ट. पहले हम ये कंसेप्ट को पहले समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. सो फर्स्ट, who are we? We have to find out ना. So who are we? So can you do one experiment? हम लोग सब साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे. हाथ ऐसे रखे. Can you put your fingers like this? Okay, move your fingers. Say I am moving. I know I cannot hear, but I can see your lip sync. मुझे पता है मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाऊंगा, पर लिप सिंक सुनना है. Okay, say I am moving my fingers. Okay, neck. I am moving my neck. मैं मेरी गर्दन घुमा रहा हूँ, मैं अपनी उंगलियां घुमा रहा हूँ. If I move the whole body, what I will say? अगर मैं पूरा शरीर घुमाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? I am moving my body. So simple. Who is the mover of the body? शरीर को घुमाने वाला कौन है? I am. That I am is the soul. I am जो है, जो शरीर को मूवमेंट कराता है, that is the soul. That is the reason in Bhagavad Gita it is said, the soul cannot be killed, cannot be drawn, cannot be buried. Soul को डुबाया नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, दफनाया नहीं जा सकता. You can do all this with the body. ये सिर्फ आप शरीर के साथ कर सकते हो. Yes or no? Simple. So याद रखना, we are the soul and this is the body being operated by us. हम सोल है और हम इस बॉडी को ऑपरेट कर रहे हैं. Okay, let's do another experiment. Think of an apple. Not iPhone. Apple की बात कर रहा हूं. Right? So what you are doing? You are creating a thought of an apple. आप एक एप्पल क्या, आपने एक एप्पल का थॉट क्रिएट किया. राइट? सो who is the producer of the thought? I am using my mind producing this thought. मैं अपने माइंड का इस्तेमाल करके इस विचार को उत्पन्न कर रहा हूं, या विचार मैंने क्रिएट किया. So who is the producer of the thought? I am the producer of this thought. So when we create thoughts and emotions, depending upon what kind of situation we go through in our life, we generate certain negative thoughts, negative emotion, positive thoughts, positive emotion. Yes or no? Yes? Okay. So if you, suppose if you do not get promotion, let's say you are working and you are not getting promoted, so because of that, you got emotionally disturbed. How come all the colleagues are getting promotion? I am not getting promotion. सबको promotion मिलता है, मुझे promotion नहीं मिलता है. I am doing housework. My Dirani is getting all the credits, getting upset. वाह क्या खाना बनाती है, क्या अच्छा बना है. My in-laws never praise me. मेरे in-laws कभी मुझे praise नहीं करते कि क्या तू खाना बनाती है. All this masala item, comes in from our mind, thoughts, emotion. Yes or no? Now, looking at the situation, what kind of thoughts and emotion we produce, that is up to us. Yes or no? Situation के हिसाब से हम विचार और इमोशन पर, अब हम भरते कहाँ पर है? In our system. Yes or no? Now same, emotionally, if you are happy or sad, that emotion is also the producer. Who is the producer of that emotion? I am the producer of the emotion. Whether I am happy, whether I am sad, or whether I am angry. मुझे गुस्सा आता है, मैं दुखी हूं या मैं खुश हूं, ये सब
कौन करता है? मैं, आत्मा, शरीर पर ये होता है सब, right? I am the producer of my emotions. So I am the soul. That we need to remember, that I am the soul. I am operating this body. मैं इस body को operate करता हूँ. So it is said, we generate the thoughts and emotion through our mind. हम हमारे mind द्वारा thoughts और emotion generate करते हैं, whether it is positive or negative. चाहे वो positive हो या negative हो. So where is mind? According to medical science, this is brain, ना? ये brain है. So where is mind? Not like नाना पाटेकर ने वो पीछे की तरफ वो नीचे छोटा मगज होता है, छोटा, is it? No, the mind is. So according to the spiritual science, mind, it says our physical body, energy body, emotional body and mental body. हमारा शारीरिक शरीर, ऊर्जा शरीर, भावनात्मक शरीर, मानसिक शरीर. All this. So it said सूक्ष्म शरीर, भावनात्मक कामकोश शरीर, मनकोश शरीर, शारीरिक शरीर, सारा मिलके स्थूल शरीर, all together is called mind. So mental body creates thoughts, emotional body creates emotion, mental body विचार उत्पन्न करती है, emotional body emotions उत्पन्न करती है. Did you understand? So we use, it's like a soul is the operator of all these four bodies. Soul ये चारों body का operator है. विचार भी उत्पन्न करता है, emotions भी उत्पन्न करता है. The soul is creating, using the mental body, creating the thoughts, using the emotional body, creating the emotions, and all these thoughts and emotions slowly go to energy body and in the chakras. फिर ये कहाँ जाते हैं? धीरे धीरे हमारे body में, हमारे chakras उसको absorb करते हैं, right? So now a very beautiful experiment जिसकी बात करेंगे, effect of our thoughts and emotion on our body. We will quickly just work, we'll just go through the experiment, that how our thoughts and emotions affect our system immediately. हमारे विचार और हमारे emotions, उसका हमारे शरीर पर कैसा असर होता है, तुरंत कैसा असर होता है, वो हम देखते हैं. Okay, so there was an experiment done by Dr. Masaru Emoto, very famous doctor, जो scientist थे, उन्होंने एक experiment किया. What was the experiment? He took 3 glasses, half filled with water and some rice in it. उन्होंने 3 ग्लास लिए पानी के, उसमें आधा आधा पानी भरा और थोड़े थोड़े चावल डाल दिए. He will enter the room every day. वो कमरे में आएंगे. Looking at the first glass, he will say thank you. पहले ग्लास को देखकर बोलेंगे thank you. He will move towards second glass. दूसरे ग्लास की तरफ जाके बोलेंगे you disgust me. तुमने मुझे निराश किया. He will go near the third glass. He will not say anything. He will just ignore. He just ignored the glass and went away from there. So he never looked at the third glass. And he did this for whole month. 3 महीने तक यही एक्सपेरिमेंट. मतलब रूम कमरे में ये 3 ग्लास रखे हुए, एक बार अंदर कमरे में आएंगे, थैंक यू, यू डिस्कस मी, एंड थर्ड ग्लास इग्नोर्ड. After 1 month, the result was this. The first class where he said, thank you, there was a fantastic aroma. चावल की सुगंध थी पहले ग्लास जहां उन्होंने बोला था थैंक यू. Second class where he said you disgust me, जहां बोला था तुमने मुझे निराश किया, it was all that, half rotten. Okay. And third glass where he ignored was completely rotten. तीसरे ग्लास में जब उन्होंने बोला था, मतलब सॉरी बोला नहीं था, इग्नोर किया था जिस ग्लास को, वो कंप्लीटली जो राइस थे वो सड़ चुके थे कंप्लीटली. ओके, सो इट इज लाइक दिस. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दैट इफ समबडी इग्नोर्स यू, यू फील टेरिबल फ्रॉम इनसाइड? आप में से कितने लोग हैं जिनको महसूस हुआ है कि कोई आपको इग्नोर करता है ना, तो आपको बहुत गुस्सा आता है, इरिटेट, फ्रस्ट्रेशन फील होता है? Can you just raise your hand? Yes, out of 169 सिर्फ 21 लोगों को होता है, बाकी सब लोग एकदम संत महात्मा की सीढ़ियों पर चलते हुए आते. तो आपको हम नमस्कार करते हैं कि आप महान है. हम भी आपसे कुछ सीखेंगे कि आपको ये कुछ असर ही नहीं होता है कि कोई आपको इग्नोर करे, आप बोले अरे
हटाओ इसको, आई एम द बॉस। और अगर आप लोग ने सच में ये डेवलपमेंट किया तो धन्यवाद, हमें भी कोई टिप्स दे दो, हमें भी थोड़े आशीर्वाद भेज दो, तभी ताकि हम भी स्ट्रांग हो जाए। वी ऑल्सो बिकम स्ट्रांग इफ यू पास ऑन दैट ब्लेसिंग्स टू अस। ओके, थैंक यू। So you can put your hands up. So the thing is that now just remember, in pranic healing we say this is to prove, in pranic healing Guruji said pranic energy follows where thought or intention is focused. pranic energy वहां जाती है जहां पर हम विचार और इमोशंस भेजते हैं. So this is the example, exactly that example of that if you if for example, if this happens to the water, अगर ये पानी पे असर होता है, 70% in the human being body में क्या है? Fluid. Yes or no? Water. So that also affects human. It means when I say you stupid, it means that energy of stupid is going to impact your aura and you will react accordingly. अगर मैं मान लो आपको देख के बोलूं stupid, तो वो stupid का असर आप पर होगा ही और आप रिएक्ट करोगे ही करोगे. Yes or no? Am I right or not? For example, आप में से किसको वॉलंटियर बनना है? Anybody to become volunteer? चिंता मत करो, there are no charges to become volunteer. There is no punishment to become volunteer. Dr. Rashmi Agrawal, I saw. Unmute. Atma Namaste. Atma Namaste, sir. Yes, doctor. So quickly, अगर आपको, आप मेरे तरफ देखिए, मेरे फेस पर देखिए, अगर मैं ऐसे देखता हूँ आपको, तो आपको क्या लगता है? अच्छा नहीं लग हाँ, आपको अच्छा नाराजगी नहीं लग रहा सर? क्या सर? हाँ, गुस्से में लगता है. और मैं ऐसे देखता हूँ सर, और ज्यादा गुस्से में. अब एकदम अच्छा लग रहा है. अब my meaning is that when I change my expression, it affects you. Am I right? If I say, Yes. if I see like this, you don't like. If I see like this, you like. If even our expressions, हमारे expression से लोगों को पता चल जाता है हम मूड में है, नहीं है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेट है, प्यार वाला है, क्या मूड है, right? Now think about it the same way when I use the words. अगर मैं words इस्तेमाल करूंगा, okay? So for example, suppose if I am let's say you are a doctor working in my hospital and I am a dean of the hospital or maybe owner of the hospital. You came with the good research papers to me, आप research paper लेके मेरे पास आ गए और आपको लगा wow, the sir will be very happy to see the research. And when I look at the research paper and without looking or without I just say pathetic, ये सब क्या फालतू research लेके आ गए मेरे सामने. How you feel? If I say that क्या फालतू research paper लेके आ गए, how you will feel? Terrible? Fantastic. So if I say even that, are you out of your mind? What stupid things you have done, how you feel? Will you not feel terrible, more terrible? Exactly. When we work with people, जब हम लोगों के साथ काम करते हैं, या in everyday life, when we come across people, we release certain thoughts and emotions towards them. जब भी हम लोगों के संपर्क में आते हैं रोज बरोज की जिंदगी में, तब हम उनके प्रति बहुत सारे विचार और इमोशंस छोड़ते हैं. And it says because of that thoughts and emotions, whatever kind of thoughts and emotions we are sending them, we also harvest into 10 times. हम जैसे विचार और इमोशन उस व्यक्ति के सामने भेजेंगे, उतना ही 10 गुना कर्म के हिसाब से हमारे पास आएगा. So if I say you stupid, it means the moment I said you stupid, I have planted energy of 10 stupids in my aura. As simple as that. God has said all this device. You do good, you get 10 good. You do one bad, you get 10 bad. Simple. एक अच्छा किया 10 अच्छा, एक बुरा किया एक बुरा. So if I say thank you, just think about it. According to that experiment,
If I say, Dr. Rashmi, thank you for all the help in the hospital. Thank you. So every time you do some work and I say, Dr. Rashmi, really thank you for all the help. Thank you. You are doing a fantastic job. So every time I say thank you, thank you, thank you, you feel good about it. And at the same time, I am planting the energy of 10 thank you. So it says the moment I appreciate other, I am very generous in appreciating. People will be also generous in appreciating me, my efforts. अगर मैं आपके एफर्ट्स को जनरसली अप्रिशिएट करता हूं उदारतापूर्वक, तो कोई मेरे एफर्ट्स को भी उदारतापूर्वक करेंगे. और अदरवाइज आई विल से, क्या डॉक्टर रश्मि, व्हाट इज दैट? आई मीन दैट इज नथिंग बिग अबाउट दैट, you know, research. It's okay. I mean, anybody can do it. So you feel like, अच्छा सर आपने क्यों नहीं किया research? So the mind is like that. Anyways, coming back to the point, as simple as that, in everyday life, we may release certain thoughts and emotions which can be positive, which can be negative. So Master said, na, according to psychological science, it says we generate nearly 60,000 thoughts plus emotions. You know how many? 60,000 thoughts and emotions. Average. So हम एक experiment करते हैं. चलो, सब लोग एक experiment करते हैं. Put your hand like this. Put your hand like this. दोनों हाथ सामने सामने. Okay. Say awesome, amazing, beautiful, fantastic, wow, beautiful, amazing, wonderful, colorful. Can you feel the energy? Try to feel the energy through your palms, you know, like as if you are touching something, as if you touch kar rahe ho. Do you feel the energy? Okay, now you say, rascal. Try to feel the energy. Do you feel the energy or it has gone? Say nonsense. Do you feel energy or it's gone? How many of you notice that the moment you say, the moment you were saying good things, the energy was generated. The moment you say bad, you felt like that somebody has punctured that, you know, balloon. Psst, psst, effect. How many of you felt that? Wow. Out of 184, many people felt that. Okay. Okay, fantastic. So what is the meaning? The moment we say good words, we generate good energy. Moment we say bad words, we generate dirty energy. And what happened? The dirty energy has not vanished. Dirty energy kahan chali nahi gayi hai. You know, the dirty energy become like a stubborn, like a stone, you know, like a shell. You know, dirty energy, shell of a dirty energy, you know, like or become big stone. And that remains in our aura. Okay. Now, whenever we do conversation, so for example, just for an example, who would like to become volunteer? Okay, may I have a liberty to choose all the people, those who are right now on my screen? मेरे पास लिबर्टी है कि मैं आप सबको वॉलंटियर की तरह चूज करूं. इज इट ओके? चिंता मत करो, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसका कोई चार्ज लिया नहीं जाएगा और आपको पेमेंट का स्लिप भी कुछ नहीं आएगा. ओके, सो आई एम अनम्यूटिंग. सीमा बंसल, सपना अग्रवाल, कविता अग्रवाल अनम्यूट, तमन्ना अनम्यूट, नागलक्ष्मी अनम्यूट, प्रेरणा अनम्यूट, और कौन? स्वाति जैन अनम्यूट, उषा जी अनम्यूट, काजल अनम्यूट, रुक्मणी जी अनम्यूट, रविंदर जी अनम्यूट, एंड भद्राबेन अनम्यूट, मेघा अनम्यूट, डॉक्टर सेबी अनम्यूट, पुष्पा जी अनम्यूट, सीमा अनम्यूट. Okay, done. So let's think. Now just think about it. You all are employees. All are employees. Okay. और मैं आप स्टाफ मेंबर हो, रोज आप बुलाए जाते हैं.
Every day I do band pause Bhulai. So how I do the Bhulai? Every day I call you. Every day I call you in the office cabin, and I will slice you, with your performance. क्या बेकार, क्या तुमने ये healing किया, क्या scanning किया, क्या दिमाग के all this slicing. So when I do that, will you feel good about it? If I keep on saying क्या तुमको scanning आ गया, बराबर आता है. What I will suppose if I say कि ओ डॉक्टर क्या आप क्या समझते हो, ये क्या मेडिकल साइंस है क्या, ये स्कैनिंग कोई हवा में ऐसे ऐसे बराबर आता है क्या? If I do use that language, how you will feel? Will you not feel low? Very bad. Will get hurt. You don't feel जो क्रिस्टल हाथ में पकड़ा ना सर, एक फॉरहेड चक्र पे मार के वैसे सीधा ग्राउंडिंग हो जाएगा आपका. अगर क्राउन चक्र में डूबा ना तो सीधा हायर सोल के साथ यूनियन. नहीं आ रही है. ओके यू कैन म्यूट ऑल. ओके सब लोग म्यूट कर दो, मुझे वही सुनना था कि ऐसे समझ रही. सो इट इज लाइक दिस. नाउ whenever suppose if I do all these nasty things with you all as an employee, मैं अगर आपके साथ बदतमीजी करता हूँ, what kind of energy I will plant in you? अगर मैं आपके साथ बदतमीजी करता हूँ ना, तो what kind of energy I will plant? I will plant the energy of hatred in you. आपके अंदर मैं नफरत के बीज डालूंगा. I will always be injurious to you. मैं आपके साथ, मैं हमेशा बोल बोल के आपको इंजरी पहुंचा रहा हूँ, दुख पहुंचा रहा हूँ. मैं आपको निराश कर दूंगा बार बार बोल बोल के, तुम अच्छा नहीं करते हो, तुम्हें आते नहीं है. बार बार आपकी सिर्फ गलतियों को निकालता हूँ. Every time I just see your faults. I don't see good in you. And because of that, one day you will start having doubt on self. Because if I will keep on asking you, hello, ये क्या तुमको स्कैनिंग आता है क्या, तुम्हारा हाथ देखा कभी बराबर किया? If I will keep on saying ना, are you okay, are you blah 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 blah, you will start doubting your scanning. Rather than I can say, wow, you are putting your efforts, but why don't you, for accuracy of scanning, why don't you put your hand like this, why don't you do this exercise? मैं समझ सकता हूँ आप सब के लिए नया है, क्यों आप हाथ ऐसा न रखते हो, क्यों आप हाथ की एक्सरसाइज करो. Rather than demotivating, I am motivating, inspiring you to do scanning would be good. Rather than saying, ऐसा किसने सिखाया आपको स्कैनिंग, ये ऐसा कोई स्कैन करता है क्या? रोज रोज सिखाता हूँ, समझते नहीं है. Nobody will attend my session. साला बेकार आदमी, खुद ट्यूनआउट करता नहीं, पूरे सबको गांव को बोलता है ट्यूनआउट करो, खुद का गुस्सा कंट्रोल में रहता नहीं है. 16 प्लेसेस उसका साफ करना चाहिए. So you will have anger and hatred and all this, And then finally मैंने आपको निराश भी कर दिया ना, सब ये किया ना, एक तो ये सब किया, and then because of that you started feeling like, am I, सर मुझे हमेशा बोलते बुद्धू तेरा स्कैनिंग देखा है क्या? Every time if sir is going to say, मुझे लगता है कि मेरा सच में कुछ ऐसा ही गड़बड़ होगा. And because of all this you become sad. लास्ट में क्या हो जाएगा, आप उदास हो जाओगे, निराश हो जाओगे, right? Yes or no? और ये एनर्जी आप कैसे महसूस करोगे? You will feel these energies through which chakra? Through heart chakra. And through heart chakra, where it goes? To the physical heart and lungs. Yes or no? आप जो भी महसूस करोगे, all this despair and anger and जो भी आपको नफरत अंदर होगी, तो हार्ट चक्र में ना फील होगा ना, सैडनेस फील होगी, all this through heart chakra it will go to the physical heart. हार्ट चक्र से आप फील करके physical heart में जाएगी और lungs में जाएगी, right? Okay. Now lungs से क्या हो जाएगा? It will go in the whole body. Lungs से पूरे body में जाएगा. Think about it. Amma, speaker offer. Thank you. So what will happen? That you will feel like, oh my God, so from heart chakra, this energy goes to physical heart and lungs. Heart और physical heart और lungs में जाएगा, पूरे body में फैल जाएगा, पूरी aura में energy. And then how we register this? हमें किसी ने ये सब बोला है, किसी ने हमारे साथ ये व्यवहार किया, वो रजिस्टर किससे करेंगे? क्राउन चक्र में ना, ब्रेन में रजिस्टर करेंगे ना. सो विच चक्र इज कंट्रोलिंग ब्रेन? क्राउन चक्र. ये सारा रजिस्ट्रेशन जो लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, वो हमारा ब्रेन रजिस्टर करेगा. ब्रेन रजिस्टर करेगा तो ब्रेन कौन सा चक्र कंट्रोल करता है, एनर्जाइज करता है? क्राउन चक्र. तो कहाँ जाएगा? क्राउन चक्र में. सिंपल, क्राउन चक्र से ब्रेन में जाएगा, right?
ओके, सो अगेन ब्रेन से पूरे पूरे नर्वस सिस्टम से लेके 5 सेंसेस ऑफ यू नो organs में जाएगा, because right side brain control left side of the body, left side controls right side of the body, and all the 5 senses opposite side of the body. पांचों senses में कान, आँख, taste, सूंघना and touch, so hearing, sight, smelling, taste and touch, all these 5 senses are filled with the dirty, negative thoughts, negative feelings, and it goes in whole system. So how twin heart can help? When you do, so what kind of energy we are going to have this in our system? कौन से प्रकार की एनर्जी हमारे अंदर रहेगी? So it goes from all the chakras, it goes to everywhere, ये सारे हमारे चक्रास से पूरे बॉडी में फैल जाएंगे. These are the chakras called energy centers in yoga system, right? And it goes to all the body parts. So what kind of energy we are going to have? This energy in our system, all the energy of hatred, injuriousness, all the energy of despair, all the energy of doubt, all the energy of sadness, right or not? So for example, can you remove darkness from the room? क्या आप darkness को निकाल सकते हो room से? Yes. How you can remove? You bring light. I mean, you don't remove the darkness. You switch on the light. Room is having the light. Yes or no? हम डार्कनेस को रूम से नहीं निकाल सकते, अंधेरे को रूम से निकाल नहीं सकते. रूम में रोशनी कर देंगे तो अंधेरा चला जाएगा. सिमिलरली यू कैन नॉट रिमूव हेट्रेड फ्रॉम समवन. हम किसी के अंदर से नफरत नहीं निकाल सकते. हम प्यार द्वारा उस नफरत को ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसको परिवर्तित कर सकते हैं प्यार में वापस, हमारे प्यार द्वारा. So similarly, now just think about it. You all are my staff members, and I have planted all the energy of hatred, injuriousness, doubt, and sadness. Now I realized one day that my God, because I have my physical and psychological problem, because of my karma, I have done so much of bad things to all these people. मैंने इन लोगों के साथ कितना बुरा किया है. So I thought of saying कि चलो मैं माफी मांग लेता हूँ और सबको मैं अच्छे थॉट्स भेजूंगा. सो मैंने फोन किया, प्रेरणा को पहला फोन किया. प्रेरणा, अब ये 2 साल बाद है, 2 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ मैंने बहुत गड़बड़ किया है. तो मैंने कहा हेलो प्रेरणा, और मैं घबरा भी रहा हूँ कि प्रेरणा ने फोन रहा. हाँ हेलो, हाँ मैं आपका एक्स बॉस. हाँ वो जो आपको मैंने आपके साथ बहुत गलत किया. मुझे पता है खुसड़, तेरे फोन नंबर भी मैंने खड्डूस करके ही रखा है. बदतमीज इंसान, तेरे वजह से मेरे 2 साल में इतना और मुझे लगा माय गॉड ये तो प्रेरणा को. हाँ मैं बाद में बात करता हूँ. टुडे आई एम इन अ मूड ऑफ आस्किंग फॉरगिवनेस, बट द वन इज नॉट इन अ मूड ऑफ फॉरगिविंग. मेरा मूड है कि मैं आज माफी मांग लूं, सामने वाला का मूड नहीं है, राइट? फिर मैंने सोचा अरे प्रेरणा को किया अभी तो मैंने सोचा कि चलो अभी फोन लगाते हैं उषा जी को. मैंने उषा जी को फोन लगाया. उषा जी ने फोन ही नहीं उठाया. उषा जी ने फोन पे रखा था खड्डूस इंसान. देखते ही फोन काट दिया. साले बदतमीज, इसका तो मैं फोन कभी भी नहीं लूं. फिर मैंने सोचा चलो जाने दो. वो डॉक्टर सेबी है ना, उनको फोन करता हूँ, लखनऊ वाले को. तो मैंने डॉक्टर सेबी को फोन किया. डॉक्टर सेबी ने फोन पहले से ही वो फोन बंद करके ही रखा था अंदर. मतलब क्या बोलते हैं, अबॉर्ट, मतलब हाँ, मतलब फोन ही नहीं लगा, फिर कट ही हो गया. उन्होंने पहले से ब्लॉक करके रखा था. अब मैं सोच रहा हूँ 3 एक्सपीरियंस इतने खराब हो गया तो मैं डर गया. तो अभी मैं क्या करूँ? गॉड सेड देखो तू अपने आप तू रोज भेजेगा, रोज बोल. जैसे like you said to class, that doctor you said, Prerna be blessed with lots of love, peace, sweetness, ये सब जो गलत है ना उसका अपोजिट बोलना है ना. मैंने प्लांटिंग किया हेट्रेड, तो मुझे प्लांट करने का लव एंड पीस. मैंने इंजरी प्लांट की है तो पार्डन. मैंने सैडनेस प्लांट किया है तो हैप्पीनेस. सो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान प्रेरणा को ये दे. हो गया 5 मिनट हो गया.
अभी कौन है नेक्स्ट लिस्ट में? डॉक्टर से भी, हाँ 5 मिनट भगवान उसको दे 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 ये दे। फिर 5 मिनट सीमा बंसल, फिर 5-5 मिनट उषा जी, बाद में लंबा है पूरे स्टाफ का, 50 लिस्ट में है, और दूसरे को किया वो तो अलग। तो 5 into 50, 2 hours 50, माय गॉड 2 hours 50 minutes। मेरे घर में बोला आप लोग, आप कुछ काम भी करोगे, आप किसी प्रेयर ही करोगे? विल यू डू सम वर्क और यू विल जस्ट डू प्रे एवरी डे? व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम? पूरा स्टाफ का फोटो लेके बैठते हो, सब लड़की के फोटो लेके थैंक यू बोलते रहते हो। व्हाट आर यू डूइंग दिस नॉनसेंस? सो वन डे आई रियलाइज, यार, so there is some solution. Yes, some solution. God said that you have a limited aura. By your own you cannot. You become a channel, you can do it. तुम्हारा लिमिटेड ऑरा है, ऑलरेडी तुम बीमार हो, तुम्हारी ऑरा 2 इंच है, तो तुम क्या भेजोगे, कौन सी एनर्जी भेजोगे? सो यू कैन बिकम अ चैनल एंड डू इट. God, I can do it. Yes, you can do it. You become a channel. I am an infinite source of energy. मुझसे चैनल बन के जाके तो ये हो जाएगा. Definitely, yes. So God, that's the reason there is a prayer called Prayer of Saint Francis of Assisi in our meditation on Twin Hearts. Lord, make me an instrument of your love and peace. Where there is hatred, let me sow love and peace. The moment we become a channel of love and peace, automatically the energy of hatred can be removed. Where there is injury, pardon. When we start, forgiving others, people will start forgiving us. Where there is despair, hope. Every person, every being on the earth be blessed with hope. पृथ्वी पर हर एक जीव, हर एक व्यक्ति को आशा के किरण प्राप्त हो. Where there is doubt, faith. पृथ्वी पर जहां लोगों में खुद के प्रति संदेह है, उनका आत्मविश्वास बढ़े. Where there is darkness, light. पृथ्वी पर जहां अंधकार है यानी अज्ञानता है, वहां ज्ञान रूपी प्रकाश हो. Where there is sadness, जहां उदासीनता है, joy. वहां खुशी का माहौल हो. So through heart chakra, we have to bless every person, every being. हर एक जीव, हर एक व्यक्ति को love, peace, pardon, hope, faith, light, joy. प्रेम, शांति, माफी, आशा के किरण, आत्मविश्वास, ज्ञान और खुशी. And we do this 3 times. हम 3 बार करते हैं ना. So through heart chakra, we bless, right? Through heart chakra, we bless pink prana. Pink prana से आशीर्वाद. Through crown chakra, फिर crown chakra पर फोकस करते हुए same prayer we do and bless with white light. And then with golden light. Yes or no? So what happened? When you do 3 times, the aura is flooded with love, peace, pardon, hope, faith, light, joy. 3 बार प्रेयर करेंगे. पहले हार्ट चक्र से ब्लेस किया, फिर क्राउन से ब्लेस किया और हार्ट एंड क्राउन से ब्लेस किया. So 3 times we install energy of love, peace, pardon, hope, faith, light, joy. Now when I blessed what we say during the prayer, what Master said? Every person, every being on the earth be blessed. पृथ्वी पर हर एक जीव, हर एक व्यक्ति को. Now think about the population of the whole world. 7 billion, some, whatever amount, right? 7 billion human being. We say every person, every being. So 7 billion human population plus whatever the population of all the beings, animal, plant, every being be blessed. Think about it. Law of karma. When you bless somebody with one energy, you get into 10 times. जब हम एक व्यक्ति को हम जैसे हमने what we had seen in that experiment, you say thank you, the energy is good, so 10 thank you. Similarly, you bless a person with hope, you have energy of into 10 hope, but 7 billion into 10 times, because we bless 7 billion people, every person, every being. Whenever you will do twin hearts in future, or those who have already done, you and me all have blessed each other. Forget about blessing each other. We have even blessed everything on the earth. That includes our house, our workplace, everything. भूल जाओ अपने आप को. हमने अपने घर में, हम जो घर में रहते हैं, हम काम करते हैं, उस सब जगह को हमने एक दूसरे को ब्लेस किया था. Because every time we say every person, every being be blessed. हर एक जीव, हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहा हूं. So when you are flooded with love, peace, pardon, hope, faith, light, joy, what kind of energy you are going to attract? You will attract only the energy of same frequency. आप वही फ्रीक्वेंसी के एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे जिनके अंदर प्रेम, शांति है, माफी के गुण है, जो खुशी वाला है, जॉयफुल है. That the moment we have this energy, automatic
we will attract prosperity energy, or we will attract people, those who believe in this kind of energy work, those who believe in fair dealing will be attracted, and we have a good business, or we get the right people as a boss, as a colleague. We are the one. See, the master said, the moment we change the inner inside, outside will be changed. So when we change ourselves, our outside means outside world will change. जब हम अपने अंदर से अपनी सुधार करेंगे ना, अपना सुधार केंद्र चालू करेंगे ना, अपना इंटरनल प्यूरिफिकेशन, तो बाहरी प्यूरिफिकेशन में क्या नतीजा आएगा, हम हमारी ऑरा में वो शुद्धि के कारण राइट पीपल को अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में. So even in a relationship, when you have a lot of love and peace and hope, you will not be cranky person, you will not be frustrated person. If your heart chakra is activated, you will be very loving and kind person. On a side of forgiveness होगा ज्यादा ना, forgiveness आपके अंदर ज्यादा होगा. आप ऐसा नहीं सोचेगा, आज तूने मुझे ऐसा बोला, मैं चुन चुन के तेरा बदला लेने वाला हूँ. I am going to take revenge. I don't think so. We will have a greater, remember, heart chakra is connected with higher emotion, love, peace, pardon, hope, faith, light, love, peace, joyfulness, sweetness, tenderness, gentleness. So this we practice with our family members. When the crown chakra is activated, we do for even unknown people. It's called Sahasrara chakra. So if it is activated, you have also love and compassion, mercy and kindness for even unknown people. So it is called universal love. Clear? So twin heart can help in attracting right opportunities, right people, right kind of work. So according to in our Gujarati community, we say that in our Gujarati community, it is said that જ્યાં કંકાસ થાય ત્યાં લક્ષ્મીનો વાસ ના થાય. मीन्स जहां पर क्लेश होता है वहां पर लक्ष्मी जी रहती नहीं है. So if you are a person who has a lot of anger and hatred, we will attract only the people with anger and hatred, similar frequency. So just think about it, the people with anger and hatred will never have a peace. So are we going to have a peace in our relationship? Are we going to have a money, but are we going to be a happy person? Think about it. Sometimes people have a lot of money, but they are not happy at all. So according to what I understand from Guruji's teaching, मैं जो गुरुजी के teaching से समझता हूँ, the person who is a prosperous means the person who has a good physical and psychological good health. The person who has peaceful and harmonious relationship with all, or at least near one, dear one. And the income is stable and growing. एक व्यक्ति मेरे हिसाब से जो गुरुजी का टीचिंग है उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि एक समृद्ध इंसान की निशानी वो है कि वो एक फिजिकली और साइकोलॉजिकली बैलेंस है, व्यक्ति हेल्दी है, उसके अपने एटलीस्ट नजदीकी लोगों के सभी के साथ उसके रिलेशनशिप पीसफुल और हार्मोनियस है, और इनकम में स्टेबिलिटी है और ग्रोथ है. दैट इज कॉल्ड प्रॉस्परस पर्सन और समृद्ध इंसान. Clear? So by doing meditation on twin hearts, we raise our frequency on such a higher level that will attract the people with similar frequency. Like we say that like attracts a like. So the person who is gambling will attract always the person who is playing cards. If you are fond of playing games, like sports, you also have a friends who have similar habits or similar hobbies. Yes or no? So when we do twin heart, it helps to purify our system in shorter period of time. हमने जो what energies we have planted in others in the form of negative thoughts and negative emotions, in return we have planted in ourselves, can be removed and can be cleansed by doing twin hearts regularly. जो हमने दूसरे के अंदर विचार और इमोशंस छोड़े हैं नकारात्मक, जिसके उनको परेशान किया है, उनके प्रति बहुत सारे गंदे विचार, गंदे इमोशंस भेजे हैं, उसके कारण हमने वो एनर्जी को अपने अंदर इंस्टॉल किया है. ट्यून आउट्स करके हम इस एनर्जी को शुद्ध कर सकते. क्लियर? सो दैट्स इट. होप यू अंडरस्टूड.
Thank you, sir, for so much of understanding about the power of thoughts. कि thoughts में विचार और सोच में कितना power है और अगर हम अपने इन विचारों को जो नेगेटिव थॉट्स इमोशंस हमारे अंदर दिन भर आते ही रहते हैं अगर हम उनको चेंज करना स्टार्ट एटलीस्ट अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमारी लाइफ कैसे बदल सकती है पॉजिटिव थॉट्स है और यही नहीं आपने ये भी बताया इसका तरीका भी बताया कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन करके हाउ वी कैन चेंज आवर लाइफ्स through by changing our thoughts, by blessing people and generating good karma. It was a wonderful session, sir, and really we enjoyed your session. Anyone Thank you. with any So question? those who are interested in understanding the Twin Hearts meditation, step by step, all entire steps by steps, so then we can have another separate session, for that. So where we will guide you about the steps involved in Twin Hearts and what are the do's and don'ts, for some people, those who have some problem, physical problem, who can do it, who cannot do it, some do's, then don'ts. So then we can guide properly like that. Okay, so Surely, sir, now, we will plan a session on Twin Heart with you. anyone has a question? Any questions? $50. किसी को कुछ पूछना है? Yeah, only $50. Thank you. No question. $50 देखो उनके हाथ से समोसा गिर गया वो सीधा $50 बहुत महंगा आदमी just joking. So let's do the prayer, closing prayer. दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में silently repeat in your mind to the Supreme God, Divine Father, Mother, to our beloved teacher, Grandmaster Choa Koksri, Lord Mahaguruji Mailing, all the great ones, all the holy gurus, all the holy masters, all the saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, and spiritual advisors. We thank you for your priceless blessings. With gratitude, respect, and love. Open eyes with a smile. I say, wish you all happy time, lucky time. Thank you for joining. Thank you. Thank you so much, sir, for giving your precious time to us. Welcome. And thank you for giving opportunity. Okay, Atma, say bye-bye. See you.